Oh, hello everyone. Hello. Sorry. Guys, we are going to start in next 5 to 10 minutes. So please, till then, if you have any questions, so you can ask. Is there a class tomorrow? Yeah, Mansi probably will. Yeah, I mean, not probably. Of course, we are going to do a class tomorrow, but today is the last session. We'll complete with the project. Tomorrow is going to be, an extra knowledge section. We'll teach STL, which is going to be very helpful. Like, it is the most crucial part of competitive programming. So, we'll teach that yesterday, an introduction to STL. But today, we are going to complete the project and the last of the advanced topics of C++. Okay, So Avneet let's is. try. Yes. I hope that Dibbe, you will start the session now. I was going I to think. do the project. Shajit sir is actually going to. He said he wanted to teach some file structure today. One of the last topic. Okay. Actually, due to internet connectivity issues, it is not able to joining. Can you start the session till? So by the time I will just explain what we are going to do. Okay. Please share your screen and then we are going to do this.
I think Kshitij is on the stream, guys. So, hello everyone. Guys, any doubt till now, or we can start with the session? Any doubt till now? If anyone have, so they can ask. Our project will be based on what kind of topic? Yeah, so Avneet, we in today in project we are going to make a tic-tac-toe game using C++. It will have multiple concepts like multidimensional arrays, pointers, functions, all the good things together. And then probably we'll also open source it so you can fork the code and make it better and do your pull requests. And if want to learn these terms, do attend the GitHub workshop very soon. So guys, let us start with today's topic. Can anyone confirm if I'm audible to you? Yes, you are audible, Kshitij. Okay. Actually, I was facing some of the internet issues today, so I joined it late. Sorry for that, guys. And now let us start with today's topic. थोड़ा देखते हैं कुछ important concepts हैं which were not told earlier. तो उन important concepts को भी देखते हैं कि अब उनके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्स के बारे में, प्री प्रोसेसर्स के बारे में और नेम स्पेस के बारे में ये तीन टॉपिक बताएं. कॉन्स, प्री प्रोसेसर एंड नेम स्पेस. इन तीनों के बारे में किस को नॉलेज है. Zoom is one will need not to Zoom. अभी मैंने अपनी स्क्रीन शेयर ही नहीं की है. I am just asking who is aware of the topic, these three topics. I think now my screen will be visible. Okay, let me see the comment. And yes, voice is not clear. Sarthak, can you confirm if my voice is not clear? Clear, I think it is audible. Okay. So अभी आज हम जो ये तीन टॉपिक करने वाले हैं, मेनली नेम स्पेस, प्री प्रोसेसर एंड कॉन्स. पहले ये करेंगे, इसके बाद वी विल प्रोसीड फर्दर विद द फाइल हैंडलिंग टॉपिक एज वेल. तो अभी इन टॉपिक से देखते हैं. सबसे पहले हम आते हैं कॉन्स पे. अब जो हमारे कॉन्स होता है, हमने डाटा मेंबर्स बनने. मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रीम using namespace name and that is like I have a variable int on let's say creator id. अब मैंने क्रिएटर आईडी को अपना चेंज एक मैंने डिफाइन करी वैल्यू 113. सो दिस इज अ क्रिएटर आईडी विच आई हैव डिफाइंड. बट अभी क्या होता है कि अगर मेरा कोई यूजर आया एंड ही यूजेस द कॉन्सेप्ट लाइक ही कॉल द क्रिएटर आईडी इक्वल टू 12. तो यूजर कैन चेंज माई क्रिएटर आईडी एंड व्हेन आई विल print out the creator ID, so it will give me something different because I have created the program but someone has changed it or someone has maliciously accessed the code. Suppose he is not accessing the code directly but he is maliciously accessing the code and he changes the code, so there will be some kind of difficulties with that. तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं. लेट अस सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं. date 13 C++. Let me compile the program and let us see what is the output here. And let us run the program. तो अभी जो मेरी क्रिएटर आईडी आई डेट इज क्रिएटर आईडी 12. तो अब मेरी क्रिएटर आईडी 12 तो आ गई बट जो मेरा एक्चुअली में हो रहा था वो तो मैंने क्रिएटर आईडी तो 113 बनाई थी बट आई डोंट वांट एनीवन टू चेंज इट. तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल राइट कॉन्स्ट हियर
अब जैसे ही मैं कॉन्स लिखूंगा ना, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जैसे ही मैंने कॉन्स लिखा तो आई कैन नॉट चेंज इट। अब देखते हैं इसको कंपाइल करके कि कंपाइलेशन टाइम पे या रन टाइम पे कोई एरर आता है कि नहीं। ओके, तो इसने बोल दिया कि असाइन दिस इज अ रीड ओनली वैल्यू, दिस इज ओनली अ रीड ओनली वैल्यू एंड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। Okay, so after I write a const, the value changes to read only and cannot be modified once it is initialized. So this is the thing. So अब मैं इसको change नहीं कर सकता. So this was a thing about const. अब const सिर्फ इतने काम के लिए होता है, इतने काम को तो मैं hashtag define देके भी कर सकता था। तो अब हमारा const एक अलग तरीके से भी काम करेगा। Let us see कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब मैं const पे नहीं कर सकता, बट व्हेन इट कम्स टू पॉइंटर, अब पॉइंटर और const का क्या रिलेशन है, ये भी बहुत एक अच्छा रिलेशन है। लेट अस सी दैट। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंटर, मैंने लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल, मैंने बनाया इंट क्रिएटर आईडी इक्वल टू 113। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंटर बनाया const इंट स्टार ptr इक्वल टू address of creator ID. So I have created a pointer which is accessing the creator ID. ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले दो चीजें करके देखते हैं। ठीक है, प्लस प्लस, आई थिंक प्लस प्लस ऑपरेटर सबको क्लियर होगा, स्टार ptr, एक ये ऑपरेशन परफॉर्म किया मैंने, और मैंने एक और किया इंट quantity इक्वल टू 1, या फिर मैंने अब दो ऑपरेशन परफॉर्म करा हूँ, ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ ओनर आईडी। तो अब इनमें से कौन कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल है? एनी गेसेस कि ये ऑपरेशन 1 है, अगर मैं इसको नाम दूँ ऑपरेशन 1 का, एंड इसको अगर मैं नाम दूँ ऑपरेशन 2 का, तो कौन कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल है इसके ऊपर? एनी गेसेस? Operation 1, operation 2, please comment it guys. Any guesses about which of the operation is possible and which is not possible? No one is possible as pointer is constant. Okay, Mansi has this answer. Anyone has any different answer? 1 is possible. Okay, Vivek is saying that 1 is possible. Okay, okay. And any other comments? Any other comments guys? चलो अब देखते हैं। Let me comment this code and see if above is possible or not. ठीक है, अब फर्स्ट नॉट पॉसिबल, सेकंड पॉसिबल, अब सबके अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अभी मैंने क्या किया, उसको कर दिया, एक को कमेंट कर दिया, आई एम चेंजिंग द डाटा। देयर आर सम ऑफ द डिफरेंट। अब मैंने इसको रन करता हूँ .a.txt। सो वो चेंज नहीं हुआ। एक सेकंड, ओके, I am just printing the creator ID and let me print star ptr. Okay, first of all let us comment this as well. अभी हम देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। Let me compile it once again. जैसे ही मैंने रन किया, पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 113। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू ओनर आईडी नाउ। नाउ द पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 13। ठीक है, बट अब मैं इसको कमेंट करता हूँ एंड आई एम यूजिंग दिस ऑपरेशन। तो इसने एरर दिया, सेकंड ऑपरेशन में मेरे को एरर दिया। अब इसने क्यों एरर दिया मेरे को सेकंड ऑपरेशन में, मेरे को फर्स्ट ऑपरेशन में एरर क्यों नहीं दिया? दिस इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड। अब ये मेरा पॉइंटर है, ये मेरा पॉइंटर कांस्टेंट नहीं है। जो मेरा कांस्टेंट है दैट इज दिस इंट इज कांस्टेंट। ये मेरा इंट कांस्टेंट है, तो इसीलिए मैं इंट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ।
बट माई पॉइंटर इज नॉट कॉन्स्टेंट। जब मेरा पॉइंटर कॉन्स्टेंट होगा तब मैं पॉइंटर के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं उसको। अब मैंने क्या किया, इंट कॉन्स्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने इंट कॉन्स्ट कर दिया, तो अब कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है? इज इट लाइक फर्स्ट ऑपरेशन पॉसिबल, और इज इट लाइक सेकंड ऑपरेशन पॉसिबल, और इज इट लाइक बोथ ऑपरेशन आर पॉसिबल, और नन ऑफ द ऑपरेशन इज पॉसिबल? अब बताओ कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है आफ्टर चेंजिंग। Param is saying that none is possible, and and all of you please put it down in the comment section ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर हम थोड़ा काम भी करते हैं। ओके, 1 इज नॉट पॉसिबल, नाउ 2 इज पॉसिबल। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं एक बार। पहले 1 को देखते हैं कि 1 पे क्या आता है। वन तो अभी भी पॉसिबल है। And now let us see the second operator as well. तो अब सेकंड ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये थिंक दिस इज समथिंग न्यू इवन आई एम एड्रेसिंग। Okay, pointer should be something different too. Now let's make it constant count. Okay, I think but what actually is the concept is that अगर मैंने इधर const लगाया है, so this operation should be possible and this operation should not be possible, and अगर मैंने दोनों तरफ const लगाया है, so what is the case is that कि ये भी const है and ये भी const है। This is on if you are observing any kind of issue there, or you can share your screen and compile. I think there is some issue with my compiler, even it is showing that iostream is not included, but it is compiling down below. So can you share and compile the code? Let us see what is the difference. Yeah, hello. Yes, there is one. Okay, let me do the. One sec. I hope my screen is visible. Hello. Yes, your screen is visible, and please zoom in a bit. Yeah. What did I have to test and show? First of all, create a constant point. Let I am sharing my screen. Okay, you can do it. I am telling you. Constant integer, right? Yes, constant integer. Just create a pointer for constant integer rather than creating a constant integer itself. Write int some value and create a constant pointer for that. Yes. Now we have to perform two operations like assigning some different data to the pointer, some different variable, or incrementing or decrementing the data in the pointer.
Okay. PTR. Incrementing like this, right? Yes, incrementing it like this or assigning different values. Like create another value like sumval2 and initialize the pointer with sumval2. Yeah. Okay. Then Yes, just compile and show the output to them before each of the steps. okay, that is weird. It's right here. Test.cpp. So we are fetching the error while incrementing the pointer here. Now let us change something in the code Devason. Let us change the const int star to int star const in the pointer. Int star. Const int star and then const. So guys, as it is now shown that the pointer is not pointing to the other values, and Devason, and can you comment the line and show them that the pointer is now incrementing the value? Yes, now the pointer will be incrementing the value. Yes, so now, but if we create a pointer, which is like, Devason, can you show the code? I will explain it. But if we create a pointer, which is like const int and then const and then it is a pointer, so it will neither increase the value and will nor change the code. So if we write const before and after, yes, so it depends on the keyword where the const is written, because if we write const int, so it will return it will make the integer constant. But if we change it to const ptr, so it will make the pointer as a constant. Let me present my screen again. So now here what it is doing, it is making the integer as a constant and this is making the pointer as a constant. So there are two of the different things. And now here the data is constant, which is in the pointer. But here the pointer which is pointing to something is constant. I don't know why I was facing some of the issues. It may be because of some of the compiler issues and also never worry about it. Now let us look about the preprocessor. और अगर किसी को constant में doubt है तो एक बार constant में doubt अपने clear कर दो, because constant is very useful in the way you use it. क्योंकि आप array को access कर रहे हो, so you want to specify कि मेरे को एक pointer है, तो it should always point to the first index of the array or it should point to any of the element of the array, but it cannot change the value. तो ये दोनों चीजें बहुत एक important concept है. Rather than making the array read only, you can directly make the pointer read only. तो हम उसके अंदर एक बड़ा अच्छा concept आता है. Anyone is facing any of the doubts? अब एक चीज और देखते हैं कौन से रिलेटेड.
Can you once tell const in star const? Yes. I am telling const in star const. तो अब हमारा क्या होता है, अभी जैसे कि मानसी ने लिखा, मैं यहीं पर बता देता हूँ, रफ ओवरव्यू const int and star ptr. तो मैंने ये चीज डिफाइन कर दी. सो व्हाट इट इज सेइंग कि जो मेरा इंटीजर टाइप का डाटा विच द पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू, लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड एंड एक्सप्लेन इट. अभी मेरा क्या है, एक ये मेरा पॉइंटर है, एक ये मेरा पॉइंटर है पी टी आर, ठीक है, और एक ये मेरा डाटा है, सो इट इज माय डाटा. अब मेरा ये पॉइंटर, इसको एक मेरे पॉइंटर के पास दो वैल्यूज हैं, एक तो ये मेरा पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, सो वन वैल्यू इज ऑफ दिस वेयर इट इज पॉइंटिंग एंड अनदर वैल्यू इज ऑफ दिस डाटा. जैसे इस डाटा की वैल्यू है 20, सो अनदर वैल्यू इज 20. तो अगर मैं लिखता हूँ ऐसे int const int, अगर मैंने ऐसे const int करके लिखा और एक मैंने ptr बना दिया, so what it will do, it will make this data value as permanent. ये जो मेरी डाटा वैल्यू होगी, ये डाटा वैल्यू मेरी परमानेंट हो जाएगी whenever I write const int star ptr. बट अब मैंने क्या चेंज कर दिया, अब मैंने लिख दिया int const and then I am using pointer. तो अब मेरा क्या होगा, अब मेरी जो ये पॉइंटिंग पोजीशन है, दिस पॉइंटिंग पोजीशन विल बी परमानेंट, ठीक है. अब मेरी ये परमानेंट हो जाएगी बट डाटा वैल्यू इज नॉट परमानेंट. अब मैंने क्या किया, अब मैंने थोड़ी सी चीजें और चेंज कर दी. व्हाट आई एम राइटिंग const int and another const. तो अब मेरा क्या हो रहा है, बोथ माई पॉइंटर एंड द वैल्यू, अब मेरी ये दोनों की दोनों चीजें परमानेंट हो जाएंगी, सो इट विल नॉट चेंज. const int const ptr, okay, I have removed the pin content and now the screen will be clear to you. तो मेरा ये चीज है, तो अब both of the values are pointing to, both the values are constant and cannot point to any other value. तो मेरी ये वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती है और ये वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती है. अब एक मैं सिंपल सी चीज बोलूंगा, अब मैंने एक वेरिएबल ही डिक्लेयर कर दिया, जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया const int I equal to 5. अगर मैं वेरिएबल ही कॉन्स्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो होगा ही नहीं, तो मेरा ये वाला ऑपरेशन तो पॉसिबल कभी होगा ही नहीं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला. तो व्हाई यूज दिस टाइप ऑफ थिंग व्हेन आई कैन डायरेक्टली यूज दिस. तो अब मेरे को ये यूज क्यों करना है, बिकॉज अब मेरे को ये वैल्यू चेंज भी करनी है, बट whenever I am accessing it using a pointer, it may be the case of a function, a single function. तो मेरे को उस फंक्शन से चेंज नहीं करवानी है या फिर मेरे को इस टाइम पे चेंज नहीं करवानी है. That's why we are using const int as a pointer type thing. तो जब मैं इसको पॉइंटर से एक्सेस करूंगा it will not be changeable, बट जब मैं इसको सिंपली एक्सेस कर रहा हूँ it can be changed. ओके, तो अभी आगे फिर से आते हैं अपने प्री प्रोसेसर के टॉपिक पे. प्री प्रोसेसर के बाद थोड़ा नेम स्पेस भी करेंगे या एक कॉन्स्ट के ही और टॉपिक पे आते हैं पहले प्री प्रोसेसर पे जाने से पहले, ठीक है. अब मैंने एक फंक्शन बनाया एंड result and it is not taking any of the value, and what I am doing now, I am returning 30. ओके, अब मैंने क्या किया, out plus result and I'm printing handle. Okay, why it is not okay, let me first store it and equal to res. I think Rajesh will do. No, it is not executing.
ओके, सो अब इसको थोड़ा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बन जाएगा, बट इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्या होता है हमारे इसके अंदर, ये वाली चीज मेनली क्लियरली आपको प्रैक्टिकली मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट इट इज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब मैंने एक इंट n इक्वल टू रिजल्ट कॉल कर लिया मैंने, और मेरा एक फंक्शन है जो इसको कॉल कर रहा है। आई एम राइटिंग C++002 ओके, तो अभी मेरा जो ये प्रोग्राम हुआ, इसने क्या किया, एक छोटी सी चीज की इसने एक ये वैल्यू आई 13। ठीक है, अब इसने 13 वैल्यू आई और इसने फंक्शन ने कॉल किया एंड इट हैज असाइन्ड द 13 वैल्यू टू n। ओके, इट इज हैपनिंग, बट अगर अब क्या हो सकता है कि देयर इज सम हैकर। अब मैं एक थोड़ी सी हाइपोथेटिकल हैकर वाली बात करता हूँ, एंड ये फंक्शन कॉल हुआ था, इट वाज ऑन सम ऑफ डिफरेंट सर्वर, और ये किसी डिफरेंट सर्वर पे था। ही हैक्ड द वैल्यू और उसने बीच में वैल्यू को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी सम ऑफ द चेंज्ड वैल्यू। बट अब मैंने क्या किया, आई हैव रिटन कॉन्स्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा मेरा, ओके we can write it at the end as well. There is syntax change because I have installed some of the new version of C++. तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ एंड लेट अस सी। अभी भी मेरा सेम ही काम हो रहा है, बट व्हेन द फंक्शन इज रिटर्निंग ए वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, so it cannot be changed till it is awaked here. तो अब बाय सिक्योरिटी अगर हमको कोई ऐसी चीज करनी है दैट द फंक्शंस वैल्यू शुड नॉट बी चेंज, इसको हम क्या कर सकते हैं कि अभी जैसे मैं किसी को पॉइंटर या कुछ और चीज रिटर्न कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा व्हेन इट इज कॉल्ड इन अ मेन फंक्शन। सो वी शुड मेक इट अ सिंटैक्स टू रिटर्न कांस्टेंट वेरिएबल्स आउटसाइड द फंक्शन। अब बात आती है प्री प्रोसेसर्स की। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द प्री प्रोसेसर्स एज वेल। तो हमको ये कांस्टेंट वैल्यू ही रिटर्न करनी चाहिए अगर हम किसी फंक्शन के उस पर आ रहे हैं, तो ताकि वो चेंज ना हो पाए बीच में। अब प्री प्रोसेसर्स पे अगर हम आते हैं, तो प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, जैसे हमने हैशटैग इंक्लूड किया IOStream, तो जब मैंने हैशटैग इंक्लूड IOStream किया, तो ये क्या हो रहा है, ये व्हाट इट इज डूइंग and using namespace std in main, and I'm writing return 0। ठीक है, अब मैंने यूजिंग नेम्स हैशटैग इंक्लूड करा। हैशटैग एक प्री प्रोसेसर है, तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर कुछ नहीं होता, these are all the instructions which are given to the compiler, जो भी मैंने लिखा है। बट व्हाट इज यूनिक अबाउट प्री प्रोसेसर, और हम प्री प्रोसेसर को ही क्यों ऐसा बोलते हैं कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, अगर मेरी सारी की सारी स्टेटमेंट है तो बिकॉज प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद ये सारी की सारी चीजें हमारी कंपाइल होंगी, बट प्री प्रोसेसर्स आर कंपाइल्ड बिफोर द कंपाइलेशन प्रोसेस। मतलब कि प्री प्रोसेसर को पहले ही प्रोग्राम अपने आप वो कर लेता है, तो इसीलिए हमको प्री प्रोसेसर्स यूज करते हैं सो दैट दे कैन बी यूज्ड इवन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द थिंग्स। ठीक है, अब ये हमने प्री प्रोसेसर यूज किया, प्री प्रोसेसर को हम देखते हैं। अभी मैंने किया एक हैशटैग डिफाइन पाई एंड आई एम यूजिंग 3.14। तो अब मैंने हैशटैग डिफाइन पाई एंड 3.14 कर दिया एंड लेट मी सी आउट पाई। ठीक है, अब मैं सी आउट कर रहा हूँ पाई को। तो अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कर क्या रहा है। लेट अस सी व्हाट आवर प्रोग्राम इज डूइंग। ठीक है, इसने जैसे ही पाई आया मेरा, इसने इसको उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इसने रिप्लेस कर दिया है, बट अब क्या होता है कि हेडर फाइल्स का तो पता ही होगा आप सबको।
अब क्या होता है कि मैंने एक फंक्शन बनाया एंड इट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सम ऑफ द यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। अगर मेरी यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है तो ही ये काम होगा। या फिर एक और चीज कर लेता हूँ मैं, लेट मी डिफाइन इट अगेन, हैशटैग डिफाइन फाइल एंड 5.12 और मैंने एक बार और पाई को डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब मेरा क्या हुआ, तो इसमें क्या बोला कि पाई इज रीडिफाइंड। ठीक है, अब इसका आउटपुट भी हम देखते हैं 5.12 आ गया क्योंकि पाई को उसने रीडिफाइन कर दिया। बट अब हमको क्या करना है, इट इज द केस ऑफ हेडर फाइल। मैं हेडर फाइल से भी दिखा सकता हूँ हेडर फाइल को हम कैसे करते हैं, उसको भी हम देखते हैं एक सेकंड। सबसे पहले अब हमको ये क्या करना है, अगर हमको वी हैव टू टेल इट दैट इफ पाई इज ऑलरेडी डिफाइंड वी शुड नॉट चेंज इट, तो हम क्या करेंगे, इफ नॉट डिफाइंड एंड उसके बाद हम नाम दे देंगे इफ नॉट डिफाइंड देन ओनली डिफाइन दिस और एंड इफ। अब हम चेंज देखते हैं, लेट अस सी द चेंज। अब हो क्या रहा है, सबसे पहला चेंज तो क्या हुआ कि कंपाइलर ने वार्निंग ही नहीं दी दैट पाई इज ऑलरेडी डिफाइंड। और दूसरा चेंज जब हम आउटपुट कर रहे हैं तो 3.14 आ रहा है, इट इज नॉट 5.12। ठीक है, तो जब भी हम अपनी हेडर फाइल्स बनाते हैं, whenever we create user defined header files, like I am creating a header file here test.h। ठीक है, अब मैंने test.h किया तो सबसे पहले मेरे को क्या लिखना चाहिए कि तुम्हें if and def और मेरे को हेडर फाइल का कुछ भी नाम दे सकता हूँ, I can give any name like test and then I can define the header file as it is कि मेरे को कुछ भी डिफाइन करना है हेडर फाइल में, तो is in header file and hashtag endir। तो इससे क्या होगा, कई बार क्या होता है कि मेरे प्रोग्राम में मल्टीपल जगह पे मेरी सिमिलर हेडर फाइल इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे आई एम इंक्लूडिंग hashtag test.h और मैंने एक और हेडर फाइल बनी hashtag include poly.h। ठीक है, अब मेरे को एक poly.h की भी जरूरत थी, मैंने एक और हेडर फाइल बना ली poly.h। अब मेरे को poly.h में test.h की भी जरूरत थी, तो मैं क्या करूंगा hashtag include test.h। तो अगर अब मैं एक चीज देखूं, जो मेरा कॉन्सेप्ट इधर हुआ, लेट्स सी इट ऑन द व्हाइट बोर्ड, कि ये एक मेरी फाइल थी, मेन फाइल मेरी, दिस इज माय मेन फाइल। ठीक है, ये एक फाइल थी poly और एक मेरी फाइल थी टेस्ट। तो ये दोनों जो मेरी फाइल थी, दीज आर द हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स में हम पहले से ही डेफिनेशन डालते हैं। देन व्हाट इज वेट मानसी, आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन द केस ऑफ हेडर फाइल। ठीक है, तो अब मेरी टेस्ट फाइल कहाँ पे इंक्लूडेड थी, टेस्ट फाइल इज इंक्लूडेड इन दिस एंड दिस। हाँ, test.h is in ओके मानसी, वो भी मैं बताता हूँ, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लो, देन लेट अस अंडरस्टैंड कि वो किस में आना चाहिए। ठीक है, अब मेरी test.h इधर इंक्लूडेड थी, तो अब जैसे ही मैंने test.h इंक्लूड की, all the content of test.h is processed in the main and all the content of test.h is processed in the poly। and now when I included poly, तो क्या हुआ, test.h का कंटेंट इधर से भी मेरे पास आ रहा था और test.h का कंटेंट मेरे पास इधर से भी आ रहा था। तो अगर मैं ये डिफाइन नहीं करता इधर, अगर मैं test.h में if not defined नहीं करता, तो क्या होता, मेरे पास test.h का कॉन्सेप्ट दो बार इंक्लूड हो जाता एंड इट वुड कॉज द सेम प्रॉब्लम जब हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस में आई थी। जो सेम प्रॉब्लम हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस में आई थी, the same problem will occur here जब हमने मल्टी हाइब्रिड इनहेरिटेंस और डायमंड प्रॉब्लम हमने करा था मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ। ठीक है, जब हमने हाइब्रिड प्रॉब्लम करा था, डायमंड प्रॉब्लम,
तो हमको सेम प्रॉब्लम आई थी बिकॉज फंक्शन वाज इंक्लूडेड 2 ऑफ द टाइम, और इसके अंदर भी ये 2 बार फंक्शन इंक्लूड हो जाता है. So what we should do, it is a good programming practice to use if and if in the beginning and ending of a header file. अब मानसी के डाउट पे आते हैं. जब मैंने IOStream इंक्लूड किया, I have uses these braces, but when I am using test.h or poly.h, I am using the double quote. तो ये क्यों होता है? When I am creating a header file by myself in my directory, तो जो header files मैंने खुद से बनाई है, जैसे poly.h होगी, test.h होगी, जब मेरे को खुद की header files include करनी है, I should use the double quotes operator. Double quotes operator क्या करते हैं? It contains a pointer to my current directory. तो मेरी current directory में ये test.h फाइल ढूंढते हैं और उसको include कर देते हैं. But what these braces are doing? इसका जो pointer होता है, that is to the path folder of your C++ compiler. तो ये path पे जाता है, IOStream की फाइल ढूंढता है and it includes it. So this is the main difference between using a bracket and using the quotes. ठीक है. और हाँ, ambiguity हटाता है, जैसे कि सर ही ने बोला है कि वो ambiguity हटा देता है using the hashtag define and hashtag end. ठीक है. and I think it is 6:40. तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करते हैं and then let us proceed further with the project. फिर कल हमारे पास 2 मेजर कॉन्सेप्ट रह जाएंगे. One will be file handling and another will be SQL. और प्रोजेक्ट भी करना, तो let us discuss one another concept and proceed with the project. अब इसको सेव कर दिया मैंने. एक लास्ट कॉन्सेप्ट और करते हैं, नेम्स. अब जैसे कि सभी को पता होगा कि हैशटैग इंक्लूड IOStream करा मैंने किया यूजिंग नेम स्पेस std, और मैंने क्या किया int name. एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम बनाना, cout hello sorry. अब इससे सिंपल प्रोग्राम तो कोई हो ही नहीं सकता है. ठीक है. तो अब इसी प्रोग्राम को समझता हूँ. इसी प्रोग्राम में भी क्या दिक्कतें आ सकती हैं, व्हाट चेंजेस शुड बी मेक इन दिस प्रोग्राम, और हम इस प्रोग्राम से रिलेटेड नेम स्पेस क्यों कर रहे हैं. Srinivasi, if test.h is there is in other folder, we can use the double quotes and we can use the relative path of that folder. And if you don't know about relative path, please ping it on Google that what is the relative path and how to calculate the relative path with respect to my current folder. Or you can also watch I will share the Linux lecture for that. I think the relative path is covered in the Linux lecture, so I will share that. बट रिलेटिव पाथ होता है. अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे मेरा ये है जो मेरी करंट डायरेक्टरी है, वाई आई एग्जीक्यूट ./a.out, क्योंकि डॉट जो होता है वो मेरा करंट डायरेक्टरी को पॉइंट आउट कर रहा है. चलो ls डॉट. तो इसने क्या किया, मेरी जो करंट डायरेक्टरी के फोल्डर और करंट डायरेक्टरी के कंटेंट थे मेरे, वो डिस्प्ले कर दिए. जैसे क्या था, प्री प्रोसेसर नेम स्पेस, ये था मेरा करंट डायरेक्टरी में. ठीक है. डे 13 में मैं करंटली हूँ. तो ठीक है. अब इसने ये सारी की सारी चीजें प्रिंट कर दी. बट अब मैं एक काम करता हूँ, ls डबल डॉट करता हूँ एंड लेट अस सी द डिफरेंस. देन आई एम डूइंग ls डबल डॉट. तो ये मेरा बाहर वाली डायरेक्टरी पे आ गया. जैसे ये बाहर वाली डायरेक्टरी पे आ गया, और अब मेरे को कुछ फाइल इंक्लूड करनी है, दैट इज इन डे 10. तो मैं क्या करूँगा, ls डबल डॉट स्लैश डे एंड डैश 10. तो ये मेरे को डे 10 की कंटेंट दिखा देगा. जब देखोगे तो इसने क्या किया, डबल डॉट से मैं पेरेंट डायरेक्टरी पे जा सकता हूँ, और एंड डॉट इज पॉइंटिंग टू द करंट डायरेक्टरी. तो मैं इसी तरह से कोई इसकी भी पेरेंट डायरेक्टरी में उधर है, तो किधर भी वो जाके आई कैन पॉइंट इट टू द डायरेक्टरी एंड आई कैन यूज द हेडर फाइल विच इज डिफाइंड इन अदर डायरेक्टरी एज वेल. बट इट इज मोस्टली प्रेफर्ड टू डिफाइन द हेडर फाइल इन द करंट डायरेक्टरी ओनली. अब थोड़ा इसको चेक करते हैं. अब मैंने ये कोड करा और मैं इस कोड को कंपाइल कर रहा हूँ. आई थिंक सभी को इसका पता होगा, 004. इस कोड में तो किसी को इशू नहीं होगा.
तो मेरा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब ये मेरा हेलो वर्ल्ड आ रहा है, बट नाउ अब मैं बोलूँ कि मुझे यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी नहीं करना है, तो भी क्या मेरा कोड चलेगा? अगर मेरा कोड चलेगा, अब जैसे इसने मेरे को सी आउट में एरर दे दिया, तो हाउ टू सोल्व द एरर ऑफ सी आउट? किसी को पता है कि अब ये सी आउट के एरर को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? तो हाउ टू सॉल्व दैट? एनी आइडिया गाइस? यूजिंग एसटीडी नहीं, यूजिंग एसटीडी नहीं, हाँ एसटीडी सी आउट हमने कर दिया जैसे कि लोगों ने बोला, बट एसटीडी सी आउट हर टाइम करना एक बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा अगर मैं अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम बना रहा हूँ और मैं एसटीडी सी आउट हर जगह पे कर, सो इट विल बी ए लेंथी फॉर मी। ठीक है, ये मेरे लिए लेंथी होगा और उसके बाद ये मेरे को बार बार करना पड़ेगा। बट अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे को ये भी ना करना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर लिखूंगा यूजिंग एसटीडी सी। अब मैं क्या करूँगा, यानी अलग से मैं इसको बता दूंगा कि मेरे को यूज ही करना है एसटीडी सी आउट। प्लीज एसटीडी एक नेम स्पेस है, लाइक दिस इज अ थिंग, मैं क्लियर करता हूँ इसे। एसटीडी एक नेम स्पेस है, एसटीडी एक बहुत बड़ा नेम स्पेस है, एसटीडी के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटीज आती हैं, तो इसीलिए हमको डायरेक्टली यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखना चाहिए। एसटीडी में सी आउट सिर्फ इतनी सी फंक्शनलिटी है। जब मेरे को सिर्फ इतनी सी फंक्शनलिटी यूज करनी है, so why to include the hell lot of functionality in our program? अब अगर मेरे को सिर्फ एक सिंगल ही फंक्शनलिटी चाहिए, तो आई शुड डिक्रीज द कंपाइलेशन टाइम ऑफ माई प्रोग्राम, क्योंकि वो सिर्फ सी आउट को ही इंक्लूड करेगा rather than including the whole bunch of functionalities। तो अब मैं क्या इसको डिफाइन करवा दूंगा कि सिर्फ सी आउट ही यूज करना है फ्रॉम द एसटीडी नेम स्पेस और बाकी हमको यूज नहीं करना है। अभी जैसे हम एंडल यूज करते हैं, तो एंडल भी हमारे नेम स्पेस में ही डिफाइंड है, तो एंडल में भी एरर आ रहा है। So rather than importing the whole namespace, so I will use using std and handle। तो अब इससे क्या होता है, मेरे प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ती है, बिकॉज आई हैव इंक्लूडेड ओनली a part of the namespace rather than including the whole namespace। ठीक है, अब इसमें किसी को डाउट हो तो कोई पूछे। Anyone facing any doubt in this? Got it, okay। अब समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम एक अपना भी नेम स्पेस डिफाइन करते हैं। अब मैंने क्या किया, एक काम करता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन बनाया std and I am creating a function like, okay, let me create a function void fun, and it is see out hello। अब मेरे को एक और फंक्शन भी बनाना, जैसे कि कौन सा फंक्शन बोलूं, अब मेरे को फिर से void fun ही बनाना है, and it is like see out hi। तो अब मैं इसको ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को हटा के मैं एक सिंपल सी चीज करता हूँ, when I am calling fun। अब मैंने इसको अपने std नेमस्पेस में डिफाइन कर दिया है। ओके, तो फन ओके, अब इस चीज को हम देखते हैं, हम दो नेम स्पेस ही डिफाइन कर देते हैं। नेम स्पेस क्या लिखूं, नेम स्पेस fun and I have defined a namespace here and I am deleting it। और अब मैंने ये namespace डिफाइन कर दिया। तो अब नेम स्पेसेस का बेनिफिट भी क्या होता है कि हम यूजिंग नेमस्पेस std लिख के हमेशा कर तो देते हैं। लेट मी अनकमेंट इट नाउ।
Space. What was it? Fun2. And I am defining another namespace here. तो मैं दो नेमस्पेस डिफाइन कर दिए मेरे सेम फंक्शन से. अब नेमस्पेस को हम बोलते हैं कि दे कॉज द आइसोलेशन. तो अब मेरे को किसी भी इसमें एरर नहीं आ रहा है बिकॉज दे आर डिफाइंड डिफरेंटली. अब मेरे को फन कॉल करना है फ्रॉम नेमस्पेस 1. सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट fun1 एंड आई विल कॉल द फन. तो जब मैं fun1 का फन कॉल करूंगा तो hello विल बी प्रिंटेड एंड व्हेन आई एम कॉलिंग fun2 एंड fun so hi will be print. अब अगर मेरे को एक सिंपल उसमें भी डिफाइन करना है, लेट मी रिमूव दीज एंड आई यूजिंग std. और एक और मैंने फन डिफाइन कर दिया, फन out calling std. ठीक है. अब जो मेरे तीन फंक्शन है तीनों फन के नाम पे. अब मैं फन को कॉल करता हूँ फन. तो जो मेरा फन कॉल होगा दैट विल बी फ्रॉम std. अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा दैट विल बी फ्रॉम std. तो दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड. अब मेरा fun1 है तो जो fun1 कॉल होगा दैट विल बी कॉल्ड फ्रॉम दिस नेमस्पेस एंड जो मेरा fun2 कॉल होगा दैट विल बी कॉल्ड फ्रॉम दिस नेमस्पेस. तो अब मेरे को अपने फंक्शन मेरे 3 अलग अलग फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे. ओके, स्कोप रेजोल्यूशन के बारे में बताइए. हाँ, स्कोप रेजोल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको. तो अभी 3 अलग अलग फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे. सो आई एम यूजिंग 3 डिफरेंट फंक्शनैलिटीज. और अब मेरे को सिंगल नेम से फन के नेम से जब मैं इस नेम स्पेस में एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे को ये std नेम स्पेस का मिल रहा है. बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस इज std, but we can also define our namespace using the keyword namespace and then defining our namespace. तो उससे हमको एक अलग से वो मिल जाता है एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट मिल जाएगा जिसके अंदर कुछ भी डिफाइंड नहीं है एंड वी कैन डिफाइन थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर नेम. तो नेमस्पेस एक सेग्रीगेटेड स्पेस है. नंदिनी ने पूछा व्हाट इज नेमस्पेस. तो वो एक सेग्रीगेटेड स्पेस है जो हमको मिल रहा है रिगार्डिंग आवर थिंग. ठीक है. अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से हम नेम स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे अगर मैं std फन भी लिखूंगा तो इट विल बी सेम, क्योंकि std तो मैंने पहले से यूज कर रखा है ना. और std फन नहीं लिखते क्योंकि हमने ऊपर ही ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि यूजिंग नेम स्पेस std. तो वो अगर हम बार बार लिखेंगे तो वो std फन हो जाएगा. पर यहाँ पे अब मेरे को fun1 नेम स्पेस में एक्सेस करना है. तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है, मेरे fun1 के अंदर जाकर उस फंक्शन को कॉल करता है. तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिफाइंस द नेमस्पेस इन विच द थिंग इज प्रेजेंट एंड does the operation according to the namespace. अब यहाँ पे मेरा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या कर रहा है, इट इज डिफरेंशिएटिंग कि ये मेरा नेमस्पेस और ये मेरे नेमस्पेस के अंदर एक फंक्शन है. तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मेरा ये कर रहा है एंड कुछ ही टाइम लगता है तो थोड़ा प्रोजेक्ट का भी करते हैं और बाकी चीजें कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा एंड वी विल टॉक अबाउट STL एंड फाइल हैंडलिंग इन वेरी मच डिटेल. तो कल भी एक अटेंड करना. आज छोटा सा प्रोजेक्ट बनवाते हैं. So Divyasan, over to you. You can present your project and start building the project so that they can add the project in their CV as well. अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेते हैं. Divyasan, your screen is on and you can now. Hello. I hope I'm audible to all of you. Yes, you are audible. Okay, guys. So today we'll be making a project, and the project is going to be about C++. I mean about tic-tac-toe, right? In the end, finally, we're going to have something like this. This is a small, snapshot of what we're going to make today. I guess it's pretty late already, so I'll try to complete it, as much as I can do. Other than that, it will be, I'll tell you what are the things that are left. I will guide you through the process, and also you have to implement your version of your project. Right? As these are the last day and the project is going on, so you can extend the session 10 to 20 minutes later. Let us extend it till 8 and complete the project today only.
So Okay. guys, if you have any doubt, if you are facing any of the issues with today's session, 8 o'clock, is it okay for everyone to start to finish the project till 8 o'clock? Will it be feasible for all of you? Yes, you have a doubt, Nightbox, you can ask your doubt. Simpson, we can start off with the project. I think हाँ लोगों के भी कमेंट्स आ गए यार, बिल्कुल करो 8 o'clock तक, तो लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्रोजेक्ट के बारे में. So now let us extend this session. अच्छा 9 तक ले लो भी चलेगा. Okay guys, cool. So guys, this is a main project that we're going to do today. Okay, and I have already made a documentation for it. I will share the link with you, and you can also refer to it later if you face any difficulty while coding. This has the entire documentation of all the steps. So first Tilakam, of do all, not share the link as of now. We will share the link yeah, I'm not after the sharing. project is complete in the WhatsApp group. So guys, basically here's a very quick message. This is something that I always tell to myself before starting any project. Let me reframe it for you guys. If you have you have perfect knowledge of your shortcomings and imperfect knowledge of their achievements, so don't compare yourself yet. Okay, and you can ignore this part because I guess all of us have our own compilers. And let's look at the project in a little detailed view. Right, till now we have only seen the snapshot. This is how it's gonna look like. Okay, this is how it's gonna look like. Basically, it will be kind of a tic-tac-toe. You will put your input your digits wherever you want to do your X or O, and in that particular place, it will be automatically updating, and finally, it will tell you who's the winner. So let's see what it is all about. Before getting our hands dirty on coding, let's think about some, about the logic for a while. इस tic-tac-toe project में logic क्या है actually, guys? And even before हम इस logic को think करें, even before we can think how this logic is working and what are the, the different loops or data structures, different, approach that we need, we should know what kind of data structure that we need. And what do I mean by data structure? Like, for example, we have a tic-tac-toe board, and कहाँ पे X है, कहाँ पे O है इस current moment में, we need to keep a track of that, which place is holding what value right now. So of course, if we look at this, data, this kind of data that we are going to have, the first thing that comes into our mind is a 2D array. So we are going to use a two-dimensional array because that's the best thing to store this kind of data, right? Rows and columns where we can store X's and zeros. So let's look at it in a more nerdy way. This is how everyone will look at it, but we are trying to code the problem. So let's look at it through the perspective of a nerd. Basically, every row, as we know that array indexing starts from 0. So this is what we normally do. We have a simple array. This is think of this x0x as a one-dimensional array. And जब आपके पास एक one-dimensional array होती है, we know that the index starts from 0, 1, and then 2. That is basically n minus 1. यहाँ पे 3 है, तो 0 से लेके 2 तक चलेगा. Similarly, there are two-dimensional and n-dimensional arrays in C++ and C language, both of them. So let's focus on C++. Today, we are going to see how to declare and define a two-dimensional array and then use it in a project. So it's super evident. And guys, मेरे को other than a 2D array को matrix बोलता हूँ. So if I say matrix, just think that I am referring to this two-dimensional array. So let's write a code to define a 2D array. So okay, before I do that, let me explain you with the code itself. So guys, what I'm trying to do is, for example, imagine this situation that I want to declare an array. I will name it James Bond, and I want to, it should have to be able to hold 3 values. I want an array of name James Bond, and it should be able to carry 3 values. So how do I do that? We already know simple array declaration. I just have to say int a pointer because we are going to use the new operator. And when we use new operator, we know that it returns an address. So I'll just say James Bond is equal to new, and then what is the syntax? We say new followed by the data type, the type of data that our array is going to hold. So since I just want integer type, so I'll say data type int, and then within square brackets you say the size.
So I want an array of size 3. So it is that simple. This is how, using new operator, you can define an array. But this is what we already knew. This is how you define a 1D array. This is 1D, right? सिर्फ linearly चलता है in a single row. But what if we want two-dimensional array? Something like this. So can you guys quickly ping in the chat how to create a 2D array using new operator? Yeah, of course I'll share the code of the project soon after we finish it right now. I'll walk you through the code and then I'll share the code base with all of you. Int 3 yeah, okay, Mansi, that is how we define, an array without using new operator. We can just say array 35, we can just say array 33, but here I also want, an address to that entire array. So yeah, of course, this method is also going to work. I would have to say a pointer of pointer, and still, we can see there is an array. There is a problem because this is actually defining an array of pointers, not a 2D array. There is a problem if we directly see something like this. So how do we define a 2D array? Let's quickly look into that. What we want, guys, is, let me show you how 2D array actually works. Today, what we're going to do is just imagine that first array that we define is going to hold pointers. ठीक है, मैं क्या करूँगा अभी? I'll just say, let's suppose this is my array. Every index of my array, index 0, index 1, index 2, all of these indexes are going to be pointer themselves. So I'll first make an array of pointers. This technique is called array of pointers. Yeah. And why am I defining an array of pointers? Basically, I will define an array. Every index of that array should be a pointer. अब ये pointer क्या करेगा? ये pointer hold करेगा एक simple one dimensional array की address. And how does that make sense? Let me tell you. So just imagine that this first column, the leftmost column, is an array somewhere here. Just imagine that this is an array 0, 1, and 2. So at address 0, there is an array. At address 1, there is an array. And at address 2, there is an array. So we'll first define a 1D array of pointers, and each of those index वो एक array hold कर रहा होगा. So that is how a one-dimensional array can be converted into a 2D array if you make it an array of pointers. So that is just the theory about it. चलो भी define भी करते हैं. So here I had already, in the documentation, you can learn the theory about it. I'll share this entire doc with all of you. So just imagine a situation, there are multiple arrays used collectively for one goal. And what is their goal here? For example, here we want to store this entire board, right? हमें बस ये board को maintain करना है. इसके लिए, इस purpose के लिए हमें 2D array चाहिए. So in super simple terms, I can say that I'm going to create a pointer to pointer type of array. And before reading this out to you, let's just code that. So आज एक चीज करते हैं. आज सब कुछ ना main function पे नहीं define करेंगे. I want to make everything very modular. I want to, do everything in separate functions. So first of all, let's write a function which returns a 2D character array. And why character? Because मेरे को x and 0 store करनी है array में, right? So I need an array of characters. I need a 2D array of characters. So let's see how to do that. So guys, what I'm going to do here is again very simple. I'm just going to say character pointer, and this is going to be the return type of my function. And my return type is character *** because I'm going to return an array of pointers. And basically an array of pointers is nothing but a 2D array. Okay? Let me just quickly define that function here and then let's use it. So I'll name the function create board. It will take one size, that is the size of the board that we want to define. By default, let's make it 3. If no input is given, the board size should be 3 because our board is of size 3, right? Tic-tac-toe में size 3 होती है. If we look at it closely, 1, 2, 3. So I'm making the size 3.
And अब मैं क्या करूँगा? First of all, I'm going to define a board, not board, sorry about that, character, array, pointer. I'll name it board is equal to new. And now here's the trick, guys. Just now we saw the syntax of new. When we want to create something, an array using new operator, this is the syntax. We tell it the data type. But यहाँ पे data type क्या है? We just don't want to store character. We want an array that can store pointer to character. So to do that, I'll just say char asterisk, because this is the data type that my array needs to store. So I will say char asterisk and then the size. My size is going to be board size. Okay? Because I want an array which can store a board size number of values. And this is just an argument, so don't worry about it. Board size input class आएगी, we'll call it from the main function and pass it as an argument, whatever size we need. And by default, I'm making it 3. And the reason that I'm using new operator is that it returns a dynamically allocated array. And why do we need dynamically allocated array again? Because as I said, I want to make the code very modular. So there will be multiple functions and all the functions will be, communicating or making changes to the same variable board size. That is the array. And since all of the functions are going to need the address, it is good practice to actually allocate it dynamically, because when I allocate it dynamically I can just pass this address to all the different functions and they can use it and make changes to it. अब this मैं की दूसरी point. First, now we have a array of pointers which is of size this, but now we want to make sure that these pointers are pointing to something meaningful, that is a different array. So how to do that? Now I'm going to travel through the array that we have just declared int I less than, sorry about that, board size I plus plus, and to every index of the array that we have just created, I'm going to allocate a new array to it. New character array, basically simple, because we are going to store x or o's, and again the size is going to be board size. So I guess no one should be having any doubt till here. Basically we have created an array of pointers, and to every index of that array we have assigned a new array. So this makes a 2D array. You can somehow imagine it like this. Just imagine that this is a pointer, 900, 1000 and 2000. So this is this array board. This is array board. Now it is holding 3 addresses. At address 100, the first address that the board array is holding is again another array which can store point values like this. Sorry about that. And let me make this 2000, and let me quickly make this 900, and this is 1000. So this is, guys, what we have done right now. Basically this is array board. Okay? Array board is holding addresses, and now each of those addresses are different arrays. So this is the way how you create a 2D array structure, because now we don't have to maintain these 3 arrays. Rather, मैं सिर्फ board के अंदर कोई भी index cross डाल के like this, I can talk to control any of these other arrays. So this is how 2D arrays work. Any doubts still here? Any doubts still here how to create a 2D array? Okay, Kailash, this method int James Bond is equal to new int 33. It will actually define a 2D array of size 3 into 3, but inside that you also have to allocate it a separate array. And here the other mistake is we are using a single pointer. A single pointer cannot hold a 2D array. It has to have a pointer of pointer. I guess this is clear to everyone. Now, the last thing to do is our return type. We need to return a value of type cat. So I'll just return the board that we have created. Return board. So let's quickly call board from our main function. Before that, we also need board size. So what I'm going to do is I'll say, yeah,
int board size cout cool. So once I have the board size, I can create my board. And how to create a board? चलो थोड़ा इसको और interactive कर देते हैं. Before being called, it will say cout engaging board creation. Because थोड़ा spicy रखना is important when हम bored सा हो जाएंगे. So I'll just say engaging board creation, and I'll ask for the board size. Once I have the board size, I'm going to create a character array. I'll name it board, and to that I'll assign the return value which create board will give me. So I'll say create board of size board size. So with these 3 lines, we have taken an input of board size, and we have assigned the board or the 2D array that this function is going to return into our variable board. So now comes the next task. I hope there are no doubts here. In place of board size, we could have written 3. Yeah, exactly. If I don't pass anything here, it by default it would be of size 3, क्योंकि हमने यहाँ पे default argument 3 कर दिया, right? If I don't pass any value, it's going to have size 3. But just to make it little flexible, so that we can make our tic-tac-toe board of size 4, 5, 1, 2, anything. That's the reason why I've used this board size variable. Otherwise, it's totally up to you. You can make it constant integer. At the top of the code, you can just define const board size is equal to 3 and use it everywhere. So yeah, this is just a theoretical definition, the reason of all the code that I've written. This is the code with all the explanations here, but it is all present in the documentation. And guys, now the next problem is, if I print out this board, let's quickly write a function to print out the board. I'll say okay, before that I would have to define it as void, and I'll say display board. अब display board करने के लिए it needs the board, right? इसको board का data चाहिए, so it will take the entire board as an argument. Character board, and it will also take the board size, so it will take board and size. And guys, let me do something here. Since I have written this code, let me just since this is just for displaying the board, let me do this system.clear and cout endline. So and let me explain the code what I'm doing here. Guys, basically, first of all, this is something new, system.clear. First of all, let me show you what happens if I don't use system.clear, and then I'll explain why I'm using system.clear. फिर इसके बाद मैंने क्या करा है, I'm using unit size. Coming to that in a bit. This is the most logical part. The logic goes here. What I'm doing is basically मैंने एक nested for loop use करा है. In nested for loop, it will basically go from 0 to 3 because board size में value 3 है. And what it does is for every iteration, जैसे हम pattern print करते हैं ना, I'm just printing out this 2D array. And this is where I'm printing the value, board of ij. So board में जो भी value है, just print it out and use some spacings and this decoration purpose. That is why I copy pasted this code, because this was just printing out with this decoration. And after printing out every line, we need to print some separations, right? तो मैंने क्या करा है, since मैंने पे calculate कर लिया, एक character यहाँ पे print हो रहा है, ये एक character and ये 2 characters. So every line, every unit is going to be 4 characters. तो मैंने क्या करा, I have just initialized a variable 4 into board size, because हर एक row में ये value 3 बार print होने वाली है. So I've just already initialized that value 4 times, जो भी board का size है, that is how long every row is going to be. And that is why in every row, I'm just printing out that many number of dashes as a separation. Let me just run this code and it will be clear to everyone what I'm doing, the reason for that. I'll just say display board, and inside that I'll pass the board that I've created and the board size. And let me show you what's being done here. Sorry about that, this is the wrong code.
project. Okay. Yeah. Board size. Let's create a board of size 3. Okay. So this is the reason right now our board is empty, so it's not printing out anything. But guys, this is the reason क्यों मैंने dashes print करा था, because I'm trying to print that this is a separate line. Okay. So this is the reason why this other for loop was there. It was just separating the lines so that it would be more readable, little interactive. Any doubts still here about the board display board function or something? Or we are good to go. So now let's make it little readable. ठीक है? अभी कुछ पता नहीं चल रहा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है. There is nothing readable here. If I want to put something, some value here, I would have to say, row 0 and column 2. If I want to put something here, I would have to say, row 1, column 2, or something like that. So this, so let's do something cool here. मैं क्या करूँगा? I will, fill some brand, natural numbers into it. अब इससे फायदा क्या होगा? This looks more readable right now. So, and if anyone just looks at the board, they can tell if they want to, place some value here. If they want to place their X or O in this specific cell, what they can do is they can just instead of saying that row 1, column 2, they can just say number 5, and that slot will be filled. So to do that, first of all, we have to fill our board with values. So let's define a function for that. I'll say, basically what are we doing? We are labeling our board. So I will name the function label board, and inside that again वो पूरी board की input लेगी, board and the board size. And what I'm going to do here is I'll say int count is equal to 0, and very straightforward logic. Int I is equal to 0, I less than the board size. I'm going to use the nested for loop again. J less than 0, j is equal to 0, j less than board size, and j plus plus. And in here, what I'm going to do is I'll just assign that whatever value was in this counter. What I'll do is मैं उसको उस particular location पे assign कर दूँगा. I'll just say counter and then I'll increment it. So whatever is the current value, just assign it to board and then increment yourself. And now if I call this function label board, before actually displaying the board, now we'll see the difference. I will say label board, and here I'll pass the board and the board size again. And if I now run the code, you will see a difference. Okay, my bad. The board is not yet filled. Board IJ and board size. Did I save this code? Okay, wait. That is weird. Label code, board size. I pass the address. Okay, so let's see what's wrong here. Guess I've done something weird. Okay, here's the reason. This is a character array, and I have initialized it as a integer. So I'm going to say char counter is equal to index 0. That is this 0 as a digit, and in here I'm going to pretty much everything is going to be same, I guess. Let's just quickly verify it. Yeah, so now our board is filled. We have 0, 1, 2, 3, 4, 5, and it is more readable now. अगर मुझे यहाँ पे कोई value डालना है, मुझे ये नहीं बोलना पड़ेगा कि row 1 and column 2. I can just say number 5, and that should do the work for me. I guess there should be no doubt still here, or are there any? Any doubts till this point? How we are labeling the board and printing it out?
Guys, ask your doubt if you have any. Okay. If you have any doubts, you can ask in the chat, guys, or we can continue. Say yes or no, guys. Can we continue? Or you have any doubts? Okay, so I guess it's clear to everyone, and let's proceed with it. So I guess मैंने यहाँ label board में थोड़ा सा कुछ गलत करा है. And K is unit size and this unit size. Never mind. So guys, what I'm doing right now is, sorry about that. इसमें 4 नहीं लिखना था. Okay, cool. So it's more readable now. And let's move on to the next part. So we have labeled the board and we have also displayed the board. So we have cleared till here. Now, this is what we have done till now. We have displayed it in a very readable format and we have labeled it. So 30% of the project done है. अब आते हैं इसका logical part. We have displayed and initialized data structure बन गया. So this is what we have done till now. We have checkmarked this, but now the loop begins and let's see what's the next part. So now, in simple terms, the game should run till either one of the player wins or it is a draw. So tell me guys, कब तक tic-tac-toe board के tic-tac-toe game चलता है, right? Either all the slots are filled or the game is draw or some player wins. So that is the condition till when the loop should run or when the game has to stop. So here is a basic code for that. This is a function, but now we are going to define it in our own way. So in the documentation, you can find the entire code with the comments and what was the reason of using it. Here I'm going to walk you through the code. So I'll say void. This is again another function because remember modular karna. So I'm going to define here board and I'll say int board size as a parameter. Hello. हाँ भाई क्या कर रहा है? अरे वो जो क्यूब कौन हो रहा है? 4 मई से क्यूब कौन हो रहा? हाँ. Okay. Oh, sorry. I don't know. In both sides. Sorry, everybody. So यहाँ पे मैंने एक नया parameter use किया भी player IDs and we have not defined that till now. So guys, first of all, let's also define a function which will pick player IDs. Basically, player IDs कुछ नहीं है. This is just to make the board make the game little more interesting. So that just player 1, player 2 नहीं, we can print out the names. So for that we will define another function which is going to return us how do I put this? It will return me an array of names of the players. So basically, it will take the input from the users and return it to the main function. So I'm going to name it fetch players, and it's not going to take any argument as an input. And what I'll do here is I'll just using the same method that we have done before. I'll define a variable player names is equal to new. Since it is an 2D character array, you can think about this as a 2D character array, which is going to have size 2 because it is going to have 2 elements. And after that, every element of this, player names array can be of size 30. किसी का नाम maximum 30 values तक हम allow कर सकते हैं. Names longer than that are not allowed. Or you can make it 50, depends whatever you want to take. I'll just go with 30 and to every index, first of all, I'll assign a new array. Okay? To every index of the variable player names, I'm just assigning a array, a single one-dimensional array of size 30. And I'll ask the user, hey, what's your name? Or to make it more meaningful, I can also say player and space and I'll print I plus 1 so that in first iteration it will say player 1 name, it will ask for the player 1 name, and in the next iteration it should ask for the player 2 name.
I know I'm going kind of fast because I'm trying to wrap this project in this single session. So if you guys face any doubts, feel free to ping in the chat ASAP. I will repeat that for you. And after that, once I've defined an array and stored the names inside it, okay, I've not stored the name, cool. I'll also store the name. So here we have asked the player for any name, and then whatever input the user gave, I assigned it into the array player names that we have just defined, and I'll now return the array player names. So just like that, guys, we have an array which has a name of players, and now I'm going to call that from our main function. I'll say char player names. Let's make it little small. Player IDs is equal to fetch players, and then I'll call the run game function जिसके अंदर जाएगी board array, the board size, and this player name, player IDs array. And now we can use this run game function. So guys, any doubt till here? I guess this was pretty clear because this is we've already done this when we declared our the tic-tac-toe board. This is the same thing again, but now instead of being board size into board size, it's of size 2 because we need only 2 players. Tic-tac-toe से 2 ही players खेल सकते हैं, right? And every name is going to be size 30, so new cap 30. Nothing fancy here again. And there are any doubts still here? Put in the chat, or let's continue with follow. So I guess there are no doubts here, and let's do the next function. So let me, this is the most important part of the code because this is where everything, the entire game will be controlled from here. So firstly, we already know what the run game function does. It actually just, controls the entire loop that prints out the board and takes input and manages everything. So first of all, मैं इसमें एक छोटी सी character array define करूँगा, which will store the different values that we need to print. So we know that या तो x या o ही use हो सकता है अपनी game में, so I will define that, and also I'll define a variable player turn. So first of all, the turn will start from 0, and at every in every iteration we will reverse it. First 0, then 1, then 1, then 0, and just like that we proceed because tic-tac-toe में alternate players का turn चलता है. And in every iteration, guys, first of all, we need to display the board. Okay, because every time that the game is being played, we need to display the board to the user. But other than that, उसको पता कैसे चलेगा game चल रहा है या नहीं चल रहा. Now let's also define an extra variable rounds is equal to 0, because we know that there can only be 9 rounds in this game. क्योंकि game में सिर्फ 9 slots होते हैं, right? If you look at it closely, there are only 9 slots. So there is no point of playing the game for more than 9 turns. So that is the reason I've initialized with 0, and what I'll do here is I'll just say while rounds is less than 9, and just like that I'll proceed with the game. So first of all, here's something that I need to do. Player turn, we know that right now player turn is 0, but in every iteration we need to flip it. When it is 0, we need to make it 1. अगर 1 है तो 0 1. So here's how easy it is. If player turn is this much, then just make it 0, else make it 1. So in every iteration it will flip itself, because we know that 0 means false. तो अगर इसमें false है तो sorry, अगर इसमें 1 true, अगर true है तो ऐसा make it 0. If it is false, then come to the else block and make it 1. So this is how we learned this back in ternary operator when we studied about that. Ternary operators. And guys, here comes the next part. So basically, we need to have 2 variables int xy
coming to the reason of that in a bit. But first of all, we'll just say cout. I'll say player ID. This is the array in which index this is my player key names here. And inside that I'll put the player turn index, because player turn index can only be 0 or 1. So इसके अंदर पूरी वो रहेगी player turns player IDs will be printing out कि कौन से player का turn है right now. And after that I'll print a suitable message, your turn. And एक line delete कर देते हैं. Cool. So I guess that is clear. And guys, here's the next thing. अभी एक दूसरा problem आता है कि the user is going to enter one of these digits. It's going to be 0 or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, something like that, right? Just some integer value like that. But here's something that we need to make sure. हम इस directly internally like for users convenience we are taking a single digit as an input, but internally we cannot just say board of 4 is equal to x or o, something like that. We need to convert this 4 into something like row 1 column 1. If someone inputs 8, we should know that it is row 2 column 2. So we need to convert this single digit into rows and columns, that is x and y. So how to do that? So to do that, again we'll make a different function जिसका name होगा choice to chords. Let's name it choice to chords. And इसमें मैं क्या करूँगा, मैं simple अपनी x and y variable की address pass कर दूँगा. And other than that, I'll also pass the board size. Now we know that right now our board size is 3, and now of course there is an error because choice to chords is not yet defined. So let's define void choice to chords. So what I'm going to do here in choice to chords is it's going to x, y, and board size. So let's take int pointer kind of variable x, int pointer kind of variable y, and int board size. So okay, inside this, what I'm going to do, guys, here is again pretty straightforward logic. This choice to chords is first of all it will ask for a value cout, not cout because we have already printed the message here ki your turn. After that we are just going to absorb the value here or read the value whatever the user has given. I'll assign it to some value int choice and I'll say cin ch. So basically user ने जो भी integer input number input दिया it is in this variable ch. Now here's the logic. The x or the row to which the this choice should be pointing out is very simple. It is just c divided by board size. Because think about it. अगर कोई 7 input देता है, if we just divide it by 3, 7 divided by 3 is 2, right? And 7 mod 3, and what if I do 7 mod board size? 7 mod board size is going to be 1. So we got 2 and 1. If you look closely, 7 is exactly in that place. Row 2, row 0, 1, 2, and column 0, 1. So if you divide it by board size, you will get the row. If you use mod operation with board size, you will get the column. So it is as easy as that. I'm going to copy paste this and by ch board size. So after this two, when these two lines are executed, basically x में आ जाएगी the row to which the value should be assigned, and y में आ जाएगी the column in which the value should be assigned. And we don't need to return anything here because already मैंने pointers pass करे थे. So whatever value I assign it will already be present in this x and y variables. So we have defined choice to chords function now. And here comes the next part. And something that we have not yet done. We have only studied about this key yaar, okay, sorry, that exists in C. Let's not try to implement that function here. What I'm going to do here is
once that I already have got the inputs choice to chords के through मेरे x and y में valid numbers आ गए हैं. अब मुझे यहाँ पे कुछ और भी चेक करना पड़ेगा, that is board. First of all तो assign करते हैं then check करेंगे. I'll just assign board x y is equal to weapon. Why I'm using weapon? Because weapon के अंदर वो है x या 0 input करना है. And instead of directly printing weapon, I'll say player turn. क्यों? क्योंकि the reason is that now we don't have to monitor कि ये भी x या 0 print करना है. Basically player turn हर iteration में flip हो रहा है. And when we say 0, it will print x. When we say weapon of 1, it will print o. So थोड़ा work easy करने के लिए मैंने already weapon variables array define कर दी थी ऊपर. Now I'll do the next part, that is after assigning the new value, I'll just display the changes that we have done. So I'll again call the board function, display board function here. And guys, this is the reason why I was defining everything as a function. So that हम बार-बार अभी complete मुझे nested for loop लिखाना पड़े, I can just call the display board function and my entire board will be printed in one line. So I don't have to, write that redundant code again and again. So that was the advantage of using functions. Now after every change that we do, after every iteration, there is a possibility कि कोई जीत गया है, because हर एक turn के बाद it might be possible that someone has already won. So let's call a quick function. Let's call a very quick function to check that out. I'll just say int winner is equal to that. And check win condition is again a function that is not defined yet. So अभी ये check win condition को भी define करते हैं. Guys, this is the most important function of this entire code क्योंकि इसमें पूरी logic है. So I'll say it will basically return me an integer क्योंकि यहाँ पे already दिख रहा था मैं int variable में store कर रहा हूँ. And what I'll say is, let me copy this, check win condition. And in win condition, what I'm going to do is it's going to take the board size and clear turn. So I'll say char board just like that, and then I guess it was board size here. So it will take the board size and it will also take clear turn. So I'll say clear turn. And guys, what I'm going to do here is मुझे check करना है. Guys, tell me when can a person win? इतना बड़ा कोड बनाने में सिर्फ I didn't get what you're trying to tell, Varun. CIRSF. Player turn is not changing. Mansi, player turn is changing in every iteration. You can look here. Here in this line, we are using ternary operators to flip the player turn variable. So अभी अगर उसमें 0 है, how this code will execute? We know this is how ternary operators work. I'm using player turn is equal to, within common brackets, I write the condition. So अभी अगर player turn में value 0 है, we know that 0 means false. So ये expression will evaluate false and it will come to the else block. So this is equivalent to writing something like this. Let me I have also written the equivalent code to this. This is what we are trying to do. This is what we are trying to implement. If player turn is equal to 1, then player turn is equal to 0, else player turn is equal to 1. We are just flipping it. अगर 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो. And this is the one-liner solution to that. So using ternary operators. So I'll just hide this again. And let's go to where we were in check win condition. Okay. So now in check win condition, when can a person win? A person can win if रो की सारी वैल्यूज इक्वल हो जाती है, या फिर अगर कॉलम की सारी वैल्यूज इक्वल हो जाती है, या फिर डायगोनली वैल्यूज इक्वल हो जाती है, राइट? एग्जैक्टली. So there are two diagonals. This is the left diagonal, this is the right diagonal. There are 3 rows and there are 3 columns. So we have to take care of all the 6 conditions in total. So first of all, let's check the first row. And okay, I guess there are no doubts here. Yeah, we're good to go. So I'll say in check win condition, first of all, what I'm going to do is for int I is equal to 0 and I less than board size.
This is the first step that we need to do because at least उस index में travel तो करना ही है हमें. And then what I'll do is when I'm inside this, when before actually iterating through the loops, iterating through the entire 2D array, what I'll do is मैं सबसे first index पे जो value है मैं उसको store कर लेता हूँ, ठीक है? So what I'll do here is I'll store the value at index 0, this value. The reason for that is you will notice right now I just name it row val is equal to board of I and 0. So मैं कर क्या रहा हूँ, currently मैं जिस भी row में हूँ मैं उस row का first value store कर देता हूँ. So if I am in first row right now, I'll store this value. अगर मैं इस row में हूँ, I'll store 3. If I'm in this row, I'll store 6. So this is what I'm trying to do. In whatever row I am, just store the leftmost value of that row. After that, I'll now go to the inner loop. So I'll say int j is equal to 0, j less than both size and j plus plus. And in the inner loop, what I'll do is, in the inner loop, what I'm going to do is I'll say if both I of j is equal to row val. Okay, I guess मुझे यहाँ पे एक और integer variable declare करना चाहिए था, row match. I'll name it row match is equal to, okay, I'll name it 1. क्योंकि एक तो मैच हो ही रखा है, एक को हमने स्टोर करा है, ठीक है? अब अगर न्यू मैचेस फाउंड होते हैं, what I'm doing here, board ij is equal to row val. Why I'm doing this? Because row val में I've already stored the first value. So अभी अगर इसको और मैचेस मिलते हैं, if it finds that at index 0 जो भी था, अगर वो index 1 में भी और 2 में भी है, if any time this expression evaluates true, it means values repeat हो रही है, right? It means इस row में x या 0 कुछ तो भरा हुआ है, जो भी value है वो equal हो रहा है, equate हो रहा है. So in case any equality is found, I'll increase this row match variable by 1. And of course you might have already guessed, अगर कभी भी row match की value 3 हो जाती है, it means a match has been found and we need to maybe stop अगर value 3 से ज़्यादा हो जाती है. So इस logic से row check हो जाएगा, but हमें साथ साथ column भी check करना है. So what I'll do here is, here I'll just define column val and I'll name this to column match. What I'll do is, जैसे मैं ij से row check करता था, if I write the same thing again here, and instead of ij, I'll say j of I. Now it will check for column, right? क्योंकि basically अगर मैं if I interchange the values of I and j, it's like for example if I say board of j and I, it actually becomes the column. यहाँ पे मुझे एक change करना पड़ेगा. Instead of saying I of 0, that is I0 क्या कर रहा था? ith row, 0th index. Now I don't need that. I need the 0th column, that is the 0th row of the ith column. So I just replace this minimal change, and now it can also check column alongside checking rows. So if you एक बार में probably code थोड़ा सा complex होगा. If you just think about this logic, what it is doing is, if the values in the row are same, then increment this row match variable. If the values in the column is same, then increment the column match variable. And by the time हम इस for loop से निकलते हैं, I'll just use one simple thing. If row match is equal to 3, it means इस पूरी रो की सारी वैल्यूज मैच कर रही हैं, like either x से भरा हुआ है या फिर o से भरा हुआ है, right? Then it means this person has 1. If column match is equal to 3, मैं directly 3 नहीं fix करता, I'll make it both size, but you can assume that it is 3. And I'll say both sides here again. So अगर कोई भी रो completely same value से भरा हुआ है, okay, why is this an error? Okay, it's not an error, cool. Then return clear. So basically, if at any point of time एक रो या कॉलम में सेम वैल्यूज फिल्ड है, then just return whatever parameter आया था. इससे क्या पता चलेगा कि this ये लूप जहाँ से वो कॉल हुआ था winner, इस winner में clear term की वैल्यू फिक्स हो जाएगी. So now just think about this, how beautiful these functions are making it.
we are not, not having to write this entire winner and check win condition every time here in this lines. Rather, we have defined it in a function, and the player turn will automatically be filled in the winner variable. अब इसके बाद एक चीज आता है. With this logic, our first thing is done, that this will check all the 3 rows and 3 columns. Now we are left with two more things, checking the left diagonal and this right diagonal. So let's quickly write the code for that. I guess it's pretty easy now because हमने already कुछ चीजें define कर रखी हैं. Now we'll just have to use the same structure, and here I'm going to name them left diagonal, and here I'll name it left diagonal match, and here I'll name it right diagonal, and here again I'm going to name it right diagonal match. And guys, of course यहाँ पे कुछ चीजें change होगी. Like for example, I don't this why were we storing board of I and 0, because हमें ith row का 0th element store कर रहे थे. But now I want to store it as 0 of 0, because diagonal always starts from 0 0. Diagonal starts from 0 0, then 1 1, then 2 2. So I'll make it 0 0, and this I don't need this right now. What this diagonal is going to store is it's going to be let's think about it. We'll start from the last value. So I'll say this. If I want to store the value at 8th index, let me think about it. It's going to go like this. So yeah, I want to store this index in my variable, and for that I'll say where is it? This is board size -1 and 0th row. So I'll say board size, sorry about that, board size -1 and 0th row. Okay. So now let's quickly do something. Let's quickly iterate through all these loops. इसमें सिर्फ एक loop use होगा, because हमें सिर्फ एक simple row check करना है, that is the diagonal row. And what I'll do is I'll say less than board size and I plus plus. And in here, what I'm going to do is if board of I and I. Now I just wrote I and I because 0 0 1 1 2 2. That is how the diagonal goes. If board I is equal to so what is this board II checking? It's going checking for the left diagonal. So if it is ever equal to left D, then just increment the left diagonal match by 1. Then we also need to take care for the right diagonal. So if at any point of time board size -1, and so yeah, I need to be at board size -1 and I. Okay, cool. Or you can also replace this. I can be on this side and board size can be here. It will mean the same thing. Is equal to right diagonal, then right diagonal match plus this. So guys, this is little based on the logical part of the code. This is the only logical part of the code, I promise you that, because other than that सारी और बाकी चीजें displays and loops का ही है. So again we'll do the same thing जैसे पहले कर रहे थे. अगर row match 3 या board size 3 हो जाता है, column match 3 होता है, then return the player ID. So we'll also do the same thing here. If left diagonal is equal to board size, that is अगर complete diagonal same value से filled है, or if right diagonal is filled with the same thing, that is board size, then just return player turn. Okay. And अगर यहाँ में से like even if this condition is false and both of these conditions are false, so no player turn is being returned. It means no one has won till now. Either it is a draw or there are possibilities that more chances are left. So for that condition, I'll just return -1.
So guys, any doubts till here? Any doubts about this check win condition function? Quickly ping in the chat if there is any condition right here. I would request please specify the time limit so that we can plan our rest of the works accordingly after doing 95 classes. Yeah, sorry about that. This is for the project section. We decided to extend the session a bit. I hope that this line number 96. I hope that does not bother very much. Line number 96. Okay. Okay, so Varun, what I'm doing here is basically मेरे को diagonal check करना है, and to do that I'm saying board of II, and the reason is index the diagonal, this diagonal, see 0, 4, 8. This is the diagonal, and the diagonal is always at index IL. As you can see that the I is going from 0 to board size, that is 0, 1, and 2. So it will travel this entire diagonal. This is 0, 0. This is 1, 1. This is 2, 2. So that is how the diagonal goes. If you ever want to trace the diagonal from a matrix, you can just say board of II. And the line below that, board size minus 1 and I, what it's doing is in the first index, it's going to point here as board size minus 1 is going to be row 2 and index I. So here, column 1. Then that same index and column 2, and that same index and column 3. So I guess here is something. Maybe I have written it in the wrong way. Right now it is an I and it needs to be, yeah, it's cool. Okay, right. So here I have to do minus I. So when I do minus I, in every index, what it will do, in every iteration, what it will do is, right now it is at here, board size minus 0. Now it will be at board size minus 1. Then it will be at board size minus 2. So that's how it's proceeding. Or I should also give a plus 1 here. So that in first index, it's at 3 minus 0 plus 1. Sorry about that. This is minus 1. Yeah, now I hope this logic is clear to all of you. Line 97, yeah, that was line 97, right? So this is for the right diagonal, Varun. This is for this diagonal, 6, 4, 2. This diagonal. It checks for index 6, index 4, and index 2. So I hope you are clear about that now. Okay, and that completes our most crucial function of this today's project, how to check for the winner. After that, हमें और कुछ ज़्यादा करना नहीं है. We just need to call the run game function, which we are already doing. And other than that, yeah, the run game function will handle everything for us. It will check for the winner. Now there's only one little thing left to us, that agar winner, like, see what we are doing. Agar game was draw, if there are more chances possible, we are returning minus 1. Else we are returning the index of the player who has won. So we need to keep a track of that. One night will be continuing for unlimited amount of time. So how to do that? Very simple function again, a very minimal part of the function. I just have to say if winner not equal to minus 1, because when it is minus 1, then the game is drawn. If it is not equal to minus 1, then definitely someone has won. So what I will say is see out player IDs of जिसका भी turn था, not जिसका भी turn था, I can also use winner here, because that winner check win condition was returning as the index of the winner. Now I can say has won. Bow down you all. And this is not necessary. This is because थोड़ा सा spicy necessary होता है. And after that, I'll just exit from the code. I'll just exit, stop the program. So when you write this exit 0, it terminates the program, because now we have found a winner. We don't need to go with the further loops. I can just say exit 0. When you say exit 0, this is equivalent to this return 0 of the main function. It tells the operating system that this is a normal exit. This is not an error. Hence this pass 0. And just like that, exit from the code if you have found the winner. Well, if you have not found the winner, just increment the rounds variable by 1, because this is how we were keeping track of the draw. So in case that round variable does not
does not go just like that. If it goes on and goes on plus plus, after the while loop we can just say C out is a draw, and just like that we are keeping track of the draw condition as well. And I hope that completes most of the code. Let me just quickly test it out for you guys if it works fine. G++ project.cpp, I'll name it, I'll take the board size of 3, I'll name the player 1 as the Deso, that is me, and Rex, that is my dog. So here's Rex, your turn. So if I pass the value guys 2, you can see that now 2 has an O. If I now say 4, that is my turn. Now this place has an X. So I definitely want to make myself win. So let me put some appropriate conditions for that. I'll now place the value at 7. You can see that particular indexes are going and replacing by my turn, whatever my turn had to be. So I'm 6 it now. And somehow Rex has 1. That is weird because, okay, now I know the reason. यहाँ पे मैंने condition गलत डाली थी. Let me quickly show you a demonstration. 3, and I'll say, let me pass some random values. 4, and this is going to be 0. Okay, that is weird, and this might be the reason is both sides. This is both sides as well, and both sides again. Both sides plus 4 and both sides plus 1. Do directly check it out. I'm just equating it, so this should work. One, 4, and let me place right now 2, and let's say 3, and if I now say 0, yeah, now it's working fine. First row is filled, so Rex has 1. Proud on you all. And just a quick trick that you can implement in your code when you code this yourself. What you can instead do is in your display board, every time before the display board function works, just use this line, system clear. ये क्या करता है? This will give a entire game a more interactive way. So every time you can see, every time before the code is printed, this will clear the terminal for you. That is what the system clear does. Every time it will clear the terminal and override it. So if I now write 0, you can see, sorry, that was the name, my bad. So that's your turn. And now you can see if I write 4, instead of printing the this entire thing below, just going below and below every time to print a new array, it will override that, because it क्या कर रहा है, ये पूरे screen को clear कर रहा है, and then it is printing right above it. Now you can see it looks more lifelike, act like an actual game. It is clearing the screen every time and printing over it. So I guess that makes sense, and makes the game a little more interactive. And there are lots of other things that you can implement. We'll open source this code so you can fork it, learn from it, and guys, there is also the documentation for it, which I'll share with you. So I'll share this documentation with you in WhatsApp groups and Telegrams. Here you will find the reason for everything that we have done till now, with that entire documentation of all the reasons and all the syntaxes that we are using, specific explanations of all the different code snippets that we are using here, with all the syntax, equivalent codes, alternative ways. I'll share this documentation with you. So yeah, I guess that ends our project. Any questions from you? Sorry about that, I took a lot of time, but look at the bright side. You have completed a project, and you can showcase it in your GitHub sections and in your resumes that you built a C++ game. Sorry, a tic-tac-toe game with C++.
Yes, this is right on my GitHub channel. You can find it, this entire documentation, and also the code is present here. If you go to the code, actually in src folder, you can find this tic-tac-toe.cpp. That is the entire version of the code. And yeah, if there are any doubts, feel free to ping in the chat. Though it was time consuming, but really enjoyed it. Okay, that's very sweet of you guys. So can you show the check win condition function? Yeah, check win condition. Yeah, so this is the check win condition. I hope it is readable. Do you have any Hello. doubts here? I think. Hello, am I audible? Yeah, you're audible. Okay. So thank you very much, guys, and I think this series will be, lots of fun for you. बहुत मजा आया आपके साथ in this whole series, है ना? We got lots of questions, lots of queries जिसको हमने we will try to solve all the doubts, है ना? We have shared the attendance form in the chat section, तो आप वहाँ पे जाके एक बार उसको fill कर दो. ठीक है. Second thing is that कि guys do complete this tic tac toe game. आपको पूरा code मिल जाएगा on your chat session. हाँ, this series is officially over by us, but कल एक session रख रहे हैं क्योंकि most of the students are asking for competitive programming. तो competitive programming में जो बहुत ज़्यादा important use हो रहा है वो एक कॉन्सेप्ट समझेंगे और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, कल एक सेशन रख रहे हैं. ठीक है, फॉर दिस विल बी द एक्स्ट्रा सेशन गाइस, बट C++ तक का तो सफर हमने बहुत ज्यादा अच्छा तय करा है. तो इन दिस सीरीज वी गॉट अमेजिंग रिस्पांस, है ना गाइस. देयर इज वन रिक्वेस्ट. आज दिव्य सोम आज आपको एक लिंक शेयर करेगा ऑन योर रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, टेल दिव्य सोम एंड क्षितिज कि उन्होंने कैसा पढ़ाया, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग देम, कैसा लगा आपको उनसे इन 15 दिन में पढ़ना, एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग मोर. आपको डीएससी की सीरीज चाहिए या आपको क्या चाहिए इन लोगों से. तो ठीक है गाइस, तो टेल देम कि उन्होंने सही भी पढ़ाया नहीं, जिससे डॉट क्वेश्चन मार्क देख सके, एंड डॉट क्वेश्चन मार्क कैन मैनेज देम टू. तो आई होप आपको सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी. हमारे लिए तो भाई बहुत मजा आया. गिटहब का प्रोग्राम बताया था 17-18 को, 17 और 18 को हमारी एक सेशन होगा. ठीक है, एंड वहां पे हम गिटहब स्टार्ट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे. 2 दिन में हम गिटहब पूरा निपटा देंगे, बहुत तगड़ी तरीके से गिटहब करेंगे. ठीक है, DSA series will be very soon. वेरी सून गाइस. डीएसए तो यार हमारा बस आने ही वाला है समझो. ठीक है, आपको बस आज एक फॉर्म हम सर्कुलेट करेंगे, एक लिंक्डइन लिंक सर्कुलेट करेंगे जहाँ पे आपको बताना होगा, बता देना, मतलब दिस इज अ रिक्वेस्ट, कोई कंपल्सन नहीं है, बट है ना कि हाउ कैसा लगा आपको दिव्य सोम का पढ़ाना, कैसा लगा क्षितिज का पढ़ाना, हाउ यू फील कि सार्थक इज होना चाहिए सेशन में नहीं. ठीक है गाइज, एंड डोंट फॉरगेट कि 2 दिन बाद में हमारा AWS और गिटहब दोनों के लिंक्स आपके ग्रुप्स में आ रहे हैं, तो ग्रुप्स अभी छोड़ना मत, बिल्कुल भी. ग्रुप डोंट लीव द ग्रुप गाइज. ठीक है, अभी तो आ रहे हैं कोडिंग क्वेश्चंस आ जाएंगे. कोडिंग क्वेश्चन 1-2 दिन में आ रहे होंगे क्योंकि आज ही दिव्य सोम फ्री हुआ है. तो ठीक है ना. डोंट लीव द ग्रुप गाइज, क्योंकि अभी तो कंटेंट, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड एट 1 April 2021 एंड वी वांट टू एंड द सीरीज एट 1 April 2022. ठीक है, तो एक साल में आप जितनी भी तरीके के डेटाबेस मार्केट में देख रहे हैं, चाहे MongoDB है, React है, जैसे आप जितनी भी टेक्नोलॉजी मार्केट में भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सारे आप कर रहे होंगे. यू आर वर्किंग ऑन DevOps टूल्स के पे काम कर रहे होंगे, यू आर वर्किंग ऑन AWS, यू आर वर्किंग ऑन GCP, यू आर वर्किंग ऑन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्लाउड. ठीक है, जितनी भी लैंग्वेज आप मार्केट में सुनते हैं, C++, जावा, पाइथन, R, स्कालास, मशीन लर्निंग, या आप नई टेक्नोलॉजी देखें तो मशीन लर्निंग, डेटा स्ट्रक्चर, वो सब देख रहे होंगे. तो लेट्स सी कि कैसे होता है. बोथ आर द बेस्ट मेंटर वी कैन से, वी नीड सच. अरे कॉलेज का तो पता नहीं है, बट इन ऑन डॉट क्वेश्चन मार्क वी हैव सच मेंटर्स जो आपको ऐसा खतरनाक पढ़ा रहे होंगे आने वाले समय में. ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा. आप सभी ने आज का फॉर्म भर दिया होगा, है ना, फॉर्म फिल कर दिया होगा, एंड आई होप कि ना आज जब ये सीरीज एंड हो और आपके पास लिंक्स आए ना, तो आप
इस लिंक को ना स्प्रेड कर दे, आप सबको बता दे कि यार डॉट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि देखो गाइस वी आर डूइंग फॉर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, डॉट क्वेश्चन मार्क कम्युनिटी के लिए करा। एंड स्पेशल थैंक यू खोज प्रेप बाइट्स का भी कोडिंग इवेंट होने वाला है यार। प्रेप बाइट्स हैव हेल्प अस टू डू दिस इवेंट। विदाउट प्रेप बाइट्स, विदाउट खोज, विदाउट IUCE, दिस इवेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मजा आया यार आपसे बात करके, है ना, मजा आया आपके साथ ये गिग सेटअप करके। इन नेक्स्ट 2 or 3 days यू will see GitHub with you guys in next 2 or 3 days। You will see हाँ, एक चीज और, आप आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार अनाउंसमेंट। क्यूबकॉन इज एन इंटरनेशनल फेस्ट जो इंटरनेशनली होता है, अभी तक दिव्य सोम को भी नहीं पता है। और क्यूबकॉन के पासेस का हम गिव अवे करेंगे, विच इज अप्रोक्स $75 का है एक पास, एंड वी आर गिव अवे दैट पर्टिकुलर पास, जिससे आप क्यूबकॉन में जा सकते हो। यू कैन गो टू क्यूबकॉन, यू कैन अटेंड द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्यूबकॉन विच इज हेल्ड इन यूरोप दिस ईयर। तो thank you everyone, thank you for attending this series, and do attend the tomorrow session as well. Yes, we are giving it's for your benefit. We are we'll start teach STL there, which is going to be one of the most सबसे crucial part है competitive programming का, बहुत help करेगा। हाँ, तो 17-18 को GitHub है, 26 AWS है, और 19 को हमारा वो स्पेशल पॉडकास्ट कर लेते हैं हम उसे, या बिल सर के साथ हम पॉडकास्ट कर लेते हैं, या हम उसे गिव अवे कर लेते हैं। हम सब आपको बताएंगे सर हाउ मेनी डेज ऑफ DSA का कोर्स 3 पार्ट में आएगा गाइस, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, जिसमें हम बेसिक में भी हम कोड शेफ के क्वेश्चन कर रहे होंगे, इंटरमीडिएट में भी हम कोड शेफ और अदर प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन कर रहे होंगे, और एडवांस में तो यार हम पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे। STL इज लाइक हाँ आप कह सकते हो, यही होता है। STL इज लाइक SQL। हाँ, अभी जब हम देखेंगे ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है कल के सेशन में। तो आज हम ये ऑफिशियली सीरीज ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, बहुत ही ज्यादा मजा आया। आज के बाद भी आपको कभी C++ में डाउट होता है, अभी इस सीरीज के बाद भी, तो यू कैन आस्क। एंड गाइज दोज हु हैव नॉट फिल द अटेंडेंस फॉर्म टिल नाउ, आज भी नहीं भरा है, तो व्हाट कैन दे डू, दे जर्नली कमेंट ऑन आवर पोस्ट, क्योंकि अटेंडेंस फॉर्म ऑलमोस्ट सारे कंपाइल हो चुके हैं, इसको छोड़ के आज ही कंपाइल हो जाएगा फॉर द अटेंडेंस पर्पस, है ना। टुडे एट द एंड ऑफ द डे till 12 o'clock at the night you will got the assignment link, जहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। ऑल दी असाइनमेंट, जितने भी असाइनमेंट में क्वेश्चंस है वो आपको करा रखे हैं आपके सेशन में, तो आपके सेशंस के लिंक भी दे देंगे कि कौन से सेशन से कौन सा असाइनमेंट हमने लिया है, या उसको असाइनमेंट को कौन सा सॉल्व कराया है, तो यू कैन इजीली सॉल्व ऑल दी असाइनमेंट। ठीक है, मैं देख रहा हूँ यार आपके मजा आ रहा है मुझे देखने में, एंड आई होप दिस विल बी दी वंडरफुल सीरीज फॉर यू गाइज। Thank you Dibyasom, thank you Kshitij, and thank you all the organization, those who have supported Dot Question Mark for this such a great event. Thank you all, thank you audience, and hope we see you soon. Bye bye, see ya, and have a good day For you guys, and also